Morning student, welcome you all. So today I am going to teach you the term second poetry, that is No Men Are Foreign by James Kirker. So basically in this chapter we will see that poet wants to convey a beautiful message to us, that is he tells to us that there is nobody on this earth who is foreigner for us. Let's see what happened in this poetry and the what other things that poet wants to tell us. So in this blue box, please see, have you ever thought? So here the title, No Men Are Foreign. So with this title you can easily understand कि no men are foreign. So here the easily understand this title or easily convey हो जाएगा message जो poet कहना चाह रहे हैं, that is no men are foreign. So here the word foreign means those who not belongs to our country, that is foreign, जिसे हम foreigners भी कहते हैं. All right. So have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? Yes, we have thought so many times. जैसे अगर सपोज हमारी दूसरी कंट्री से कई कोई लोग आते हैं तो हम उन्हें क्या कंसिडर करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन फॉरेनर है वो हमारे लिए, बिकॉज दे लिव्स इन अनदर कंट्री. So we have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. So basically how they different from us, because they belong to a different country as well as they speak different language, and they wear different clothes, they wore different type of clothes, okay, different languages they have. So in this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. So particular basically in this poetry, poet says that no man belongs to another country. The poet wants to say that all men are same and all are equal, because we all are human being, that's why we are same. Okay, we are nobody here is foreigner. All right. So we will understand this concept through these stanzas. Okay, so let's start to understand this poetry stanza by stanza. All right. So the first stanza is, remember no men are strange, no country foreign, no countries foreign, and beneath all uniforms, a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this, in which we all shall lie? So here poet tell us that nobody is foreign here, because nobody is strange for us, because we all are human beings, no countries are foreign. Okay, so beneath all uniform, so here the word beneath all uniform means जैसे आप डिफरेंट कंट्रीज में देखते हो, सो हम सब एक ही कपड़े पहनते हैं, मीन्स हमारा जो अटायर होता है, हम लोगों ने कपड़े ही पहने होते हैं हमारी बॉडीज पे बेसिकली. सो यहाँ पे जो ऑल यूनिफॉर्म्स का मतलब है, जब आप देखते हो कि आप फ्रीडम फाइटर्स, आर वॉरियर्स, आर सोल्जर्स वियरिंग सम यूनिफॉर्म, ओके, सो उनकी जो यूनिफॉर्म होती है ये डिफरेंट यूनिफॉर्म होती है. दे वॉट डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, मीन्स अदर हर कंट्रीज की डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती है सोल्जर्स की. अब वो यूनिफॉर्म हो, बट उनका जो वर्क है मीन्स ऑल द वॉरियर्स, ऑल द सोल्जर्स वर इंडल्ज्ड इन वॉर. दे फाइट फॉर अस, ओके, दे फाइट फॉर पीस, ओके, फॉर देयर कंट्रीज. ऑल राइट. सो वो अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए, अपनी कंट्री के पीस के लिए फाइट करते हैं, है ना. बट फिर भी उनके यूनिफॉर्म्स अलग होते हैं, बट उनका जो मोटिव होता है, राइट, वॉर करते हैं, और जो उनका मोटिव होता है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑल आर सेम. ठीक है, सब सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता. दैट इज़ वाई हम जो यूनिफॉर्म्स होती हैं सिंगल, हम सब एक ही, डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती हैं, बट स्टिल वी ऑल आर सेम. अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. अब देखो डिफरेंट काइंड के अटायर भी वेयर, ओके, बट हम ब्रीथ करते हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन अ सिमिलर वे द अदर कंट्रीज सिटीजन्स ब्रीथ.
Alright, so like us, हमारे जैसे. So the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. So like our brothers means our, जैसे हम फॉरेनर्स कहते हैं ना, और जैसे अदर कंट्रीज के कहते हैं, तो जो अदर कंट्रीज के पर्सन हैं लाइक अस, वो भी इस सेम लैंड के हैं. दे बिलोंग टू द सेम लैंड. ओके, दे लिव ऑन द सेम लैंड जिसमें हम रह रहे हैं. दे लिव ऑन द सेम प्लैनेट. ऐसा तो नहीं किसी और प्लैनेट से आए हैं. और वी ऑल शेल लाई ऑन द सेम लैंड. ऑल राइट, जैसे हम इस लैंड पे ही हमारा डेथ होगी, अर्थ पे ही हमारी डेथ होगी, ऐसा तो नहीं उनकी कहीं और होगी, बिकॉज वी all live on the same land. All right, so here they too. Now see the second stanza. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest by war's long winter star. So, as I already told you, कि everybody has the same appearance. Means the outer appearance are same, because see, if you have two eyes, they also have two eyes. If you have one nose, they also have one nose. Okay, then what is the difference? There is no difference, because we look same. We our habit is same. All right, our living habit is same. Okay, so they too aware of sun and air and water. जैसे मैंने कहा था कि everybody has the same appearance. They eat same food, water, and everybody receives same air, sunlight, and lives on the same land. All right, so we receive the sunlight, air, and water. So similarly, they also received such things. All right, they also received the same air that what we have received. ओके, जो वाटर हम लेते हैं वही वो ड्रिंक के लिए यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो आ fed by peaceful harvest and by what's long winter star. So जब उनकी हार्वेस्ट यानी फील्ड्स, जो फसल है वो जब अच्छी होती है, तो बहुत पीसफुली रहते हैं, फुली रहते हैं, फुली सेटिस्फाइड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं. बट बाय द टाइम ऑफ वॉर दे लॉन्ग स्टार्व्ड. एंड द विंटर टाइमिंग में हार्वेस्ट थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो विंटर टाइमिंग को भी एक बेड टाइमिंग के रूप में यहाँ पे कंसिडर किया गया है. तो वो लोग कहते हैं स्टार्व मीन्स भूखे रहते हैं. तो इन सिमिलर वे कि जब हम हार्वेस्ट हमारे अच्छा होता है तो हम पीसफुल रहते हैं, और जब वॉर और विंटर्स होती है तो हम स्टार्व रहते हैं, भूखे रहते हैं, और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. because our soldiers and our warriors, they were indulged in the war, and because of them or because of our enemies, we suffer a lot of things. That is why जो भी हम suffer करते हैं in those condition or in these condition, in a similar way they also suffered the same thing, okay, in the war time or winter timing. So their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. So जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे उनके हाथ होते हैं. ऑल राइट, जैसे हम फील करते हैं वैसे वो फील करते हैं. तो जैसे लेबर वर्क हम करते हैं, जैसे लेबर वर्क हमारे इधर चलता है, इन सिमिलर वे उनके साथ भी चलता है. लेबर्स के हाथ देखोगे आप, हमारे हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट आप जब लेबर्स के मजदूरों के हाथ देखोगे तो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन. ऑल राइट, इट्स क्वाइट हार्ड होते हैं, बिकॉज वो काम इतना करते हैं कि उनके जो पाम्स हैं वो बहुत हार्ड हो जाती है, वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहती है. तो वैसे ही जो वहाँ के लेबर्स होते हैं वो भी उतना ही हार्ड वर्क करते हैं जितना हमारे लेबर्स करते हैं. सो जो उनके हाथ होते हैं वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं. दैट इज वाई द पोएट सेज दैट नोबडी foreign here, because we live on the same land, we eat same food, drink the same water. All right, okay, next stanza. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be worn. So, very basic things. We have two eyes, or through this eyes, we can sleep, alright, we can wake up. So, in a similar way, they also do the same thing. वो भी इन्हीं eyes से उठते हैं, इन्हीं eyes से सोते हैं. They sleep
with these eyes, and strength that we can won by love, और हमारे पास जो स्ट्रेंथ है जिससे हम किसी का प्यार जीत सकते हैं, तो वो भी वैसा ही करते हैं. इन एवरी हैंड, इफ इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, दे ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. सो एवरी लैंड पे एक कॉमन लाइफ होती है. वी हैव कॉमन रूटीन, वी हैव कॉमन स्केड्यूल्ड. लाइक हम मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, देन वी गो टू ऑफिस और स्कूल और सम अदर वर्क्स. देन एट द नाइट टाइम और इन एट द इवनिंग टाइम वी कम back at home, we took dinner with our families, and we take dinner with our families, and at the night time we all sleep. ऑल राइट, हम सोते हैं सब. सो ये सारा रूटीन जैसे हम फॉलो करते हैं ना, सिमिलर वे जो फॉरेनर कंट्रीज है, जो अदर कंट्रीज है, जो हम कंसिडर करते हैं फॉरेनर्स, वो भी वो फॉलो करते हैं. दैट्स वाई वी ऑल आर सेम. Okay, nobody here are foreign. Okay, let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall disposes, betray, condemn. So here the word disposes. So disposes means deprive मतलब किसी चीज से वंचित कर देना, आपको अलग कर देना, right? Betray means cheat. Here the word betray means होता है cheat, and condemned means होता है express completely disapproval of. किसी चीज से आप completely disapprove करते हो, agree नहीं करते, उसे हम condemned बोलते हैं. So जैसे आपको कोई कहे कि आपको you should hate to your brothers, आपको हेट करना चाहिए अपने ब्रदर से, तो हेयर द ब्रदर मीन्स डिफरेंट कंट्रीज के पीपल. ओके, उनसे हेट करना चाहिए. तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है. इट इज आवर दैट वी शेल डिस्पोजेस, दैट वी शेल डिप्राइव. हमें उनको डिप्राइव करना है, नहीं करना है, उनसे चीट करना है, नहीं करना है, या एक डिसअप्रूवल देना है, नहीं देना है, राइट? बिकॉज वी ऑल्सो मीन्स, सपोज अगर हम उनसे हेट करेंगे, हमारे एनिमीज हैं, हम वॉर टाइम पे उनसे फाइट करते हैं, राइट? सो वी ऑल्सो लूज दैट पीस, जो हमारे कंट्री की पीस होती है. वी लूज आवर सेल्व्स, आवर पीपल. ओके, एंड वी अंटिल एंड अनलेस वी हार्मिंग आवर सेल्व्स, हम खुद को ही हार्म कर रहे हैं, बिकॉज हम अपने ही लोगों को वॉर में खोते हैं. ब्लड शेड्स बहुत होता है, राइट? इकोनॉमी बहुत डाउन होती है क्योंकि पैसा लगता है. क्लियर है? सो अंटिल एंड अनलेस वी डिस्पोजेस, वी डिप्राइव आवरसेल्व्स, वी चीट आवरसेल्व्स, एंड वी डिसअप्रूव आवरसेल्व्स, बिकॉज हमारा ही इसमें नुकसान होता है. सो रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. तो रिमेंबर, जब हम उन पे आर्म्स, सो हेयर द वर्ड आर्म्स मीन्स वेपन. ओके, हथियार. तो जब हम उन पे हथियार देते हैं तो वहाँ से भी कुछ रिटर्न में आता है. ऐसा नहीं है कि हम उनको अटैक करेंगे तो वो अटैक नहीं करेंगे, राइट? तो जब भी वॉर होता है, तो वॉर में जब दो पार्टीज होती हैं तो दोनों का ही नुकसान होता है इक्वली. एंड जो हमारे अराउंड के जो नियरेस्ट जो प्लेसेस होती हैं, दे ऑल्सो सफर्ड विद अस. ऑल राइट, बिकॉज बहुत सारी डिजीज क्रिएट हो जाती हैं इससे. वेपन्स होते हैं, वेपन्स का जो धुआं होता है उससे बहुत सारी डिजीज हो जाती है. जो ब्लड शेड्स होते हैं, जो कॉप्स होती है, डेड बॉडीज होती है उनसे भी हम सबको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. और फिर हम खुद के ही लोगों की डेड बॉडीज को हमको देखना पड़ता है. ऑल राइट, सो दैट्स वाई कि दीज ये जो थिंग्स है ये सब फेस करते हैं. तो दैट इज वाई वी ऑल आर सेम एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. So at the end lines, it is the human earth that we defile. So here the word defile means pollute. All right, defile का means क्या होगा यहाँ पे? Pollute है यहाँ पे. defile का means, and our hells of fire and dust outrages the innocence. So because हम जो पर्सन्स हैं, हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफाइल करते हैं. हम खुद की कंट्री को खुद ही पल्यूट करते हैं, बिकॉज वी ऑल आर इंडल्ज इन वॉर. ऑल राइट, आर वॉरियर्स इंडल्ज इन वॉर्स, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट ऑफ आउटरेजेस द इनोसेंस. सो अब क्या होता है, आउटरेजेस द इनोसेंस, दिस लाइन पर्टिकुलर, दिस लाइन का मतलब वॉयलेट द प्योरिटी ऑफ. हम ब्रेक करते हैं, जो प्योरिटी है उसको तोड़ते हैं. बिकॉज जो फाइट होती है, जो वॉर्स होती है, उसमें फायर होती है, डस्ट होती है, और उसी के थ्रू हम सब
क्या होते हैं, हम सबको प्रॉब्लम्स होती है और हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, डिजीज को फेस करते हैं, और इसी के थ्रू हम खुद की कंट्री को क्या कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। और जब किसी और कंट्री में कुछ होता है, जो भी फाइट होती है, तो अनटिल एंड अनलेस हमको क्या फेस करना पड़ता है, वहाँ फाइट हो रही है, बट जो एयर है वो तो सेम है। अब जो एयर पे पोल्यूशन है वो सेम है, तो वो कुछ टाइम बाद हमारे पास भी आएगा और हमें भी हार्म पहुंचाएगा। दैट इज वाई वी ऑल आर सेम, बिकॉज वी ऑल ब्रीथ द सेम एयर। Alright, so remember, no men are foreign and no countries are strange, written by James Kirkup. So I hope you all have must understood this poetry very well. So basically this poetry conveys a very beautiful message कि किसी को भी आपको different नहीं समझना चाहिए, because we all are same, हमारी needs same है, हमारी habit same है। So and and the basic thing is, right, we speak different language, we wore different type of attires, different type of clothes, all right, eating habits it's quite different, but still we all are human beings. So if we are human beings, then we all are same. If we are not human being, then we are not same. Understand? If we are human, then we are same. All right, so thank you for watching this video.